Well, please come. I think you came yesterday itself, isn't it? I did, yeah. You have a female doctor. She saw me, but What happened? but you know, I just went through a consultation from another doctor, and now I'm here to see you. I have a full trust. I'm not gonna leave this place, doctor. Okay. There is something wrong. We just need to fix. Sure. And I know you can do it. Right. And what is your main concern? Can we start with that, like? My main concern is because you know how is I can explain you and put you in words. Like जैसे मसल होता है ना, मसल जब स्यों खा जाती है तो क्या होता है, मसल के फाइबर्स होने लगते हैं, right? But what is your complaint? My complaint is the whole thing is broken and it's all the flush behind my face is fallen forward. Okay. And it's a lot of, now there is a hole right here, and everything is sinking down and causing a lot of pressure. And it's like I feel like a choke. Yes. What else? It's just everything right here. Like even like if you look at the structure behind the face, you will not find the pathway. You know how like when we inhale the air, there should be exact pathway to get the air down, but now everything is gone. It's all like become a one thing behind the face. All right, that's your main concern. Anything else that you're concerned about? Fix the anatomy behind my Okay. face. That's it. And I'm giving you concern. If something happened to me, I'm not gonna come back to you. No, nothing will happen. But doctor, please me. I know it's fixable right now. Yeah, But yeah, if we it can. goes more down, then you know I have 2 kids. Okay, And where do you live? I am from US. Okay, you live in the US? I live in the US. Okay. But So when do you go back to the US? I am going back after I get fixed. I am That's okay, but Hanji. there should be a time, right, that you're looking at, because see, these surgeries all require adequate time for healing. That's my purpose of asking. My family is all ready. I don't know if they call you or not. Okay. There is a one Punjabi doctor in India too, because they know my family, who Sure. we are. So he said that I'm going to open the face no matter what, because they trust us. You know what we're saying. But I am going to put my trust in you, because I had a consultation with you. Exact the things you told me, that 3D ultrasound is gonna tell the soft tissue structures compared to MRI and CT scan. We did numbers of MRI and CT scan in America. Okay. Nothing came up. Where exactly do you live in the US? In Fresno, California. Okay. हाँ जी. So it's like you have a और few. अब हम आपको दूसरी बात बताना चाहते हैं हाँ. कि हम एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दिया था. हाँ. ओके. तो वो डिवोर्स ऐसे है कि दे आर वेरी वेरी रिच पीपल इन अमेरिका. ओके. उनके गैस स्टेशंस वगैरह हैं. हमने उनको डिवोर्स दे दिया और हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज ही ऑब्सेसिवली वांट मी, बट आई कुड नॉट गो थ्रू हिज अब्यूज. तो क्या हुआ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा गेम प्लान बना के हमारे ऊपर एक्विजिशंस लगा दी, जो अभी हम उस एक्विजिशन को फाइट कर रहे हैं. सो जस्ट फॉर यू FYI सॉरी, कुछ गलत नहीं है. Just because I'm your client, you're gonna treat, so you should know like what's going on, right? But now you've come all alone here, or you have some friend or family here? No, I came here all alone. But my brother, the moment you're gonna tell me that you're gonna do a surgery, my family, my mom, they are all gonna come here. Okay, and then we can go at the surgery. Yes, after we that. can do surgery. So, do you want to me to look at this immediately, or you think it's gonna happen much later? Like what? I mean, like when do you want me to plan the surgery and all that? You can plan anytime. It's up to you. Give me the cost. So the costing, my executive will let you know. I've already been, what shall I say, told about your requirements by my junior doctor. Right. And we also wanted a physician to take a look at you for one reason only. Right. Because you have a history of epilepsy. Right. So that's something our anesthesiologists and the physicians are concerned about in case we plan a surgery. Right. Now, your main issues, as you put earlier, and also what you're telling me now, is a lot of tightness here, finding it difficult to breathe. हम लेमन टर्म में बताते हैं आपको, राइट? इट्स मच ईजियर. अभी जैसे इन्फेक्शन होता है, जो सब एक्यूट इन्फेक्शन होता है, इससे स्लो प्रोग्रेशन, बड़ा लंबे टाइम से हो रहा है, 5 years से. सो इट्स नॉट लाइक over day, you know, it didn't happen like that. It's happening every single day. तो जैसे इमेजिन करो कि स्यों खा गया इसको, राइट? जब वो खा जाएगा तो स्यों कैसा हो जाएगा? वो बूर जैसा हो जाएगा. तो वो क्या करेगा? नीचे गिरने शुरू होएगा. जो हमारी जो हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं फेस में, तो वो जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है उन्होंने उनको सपोर्ट करा हुआ है.
राइट। अगर वो नीचे से निकल जाए तो हार्ट स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, उनमें पुल होगा तो प्रेशर होगा, राइट। यहाँ पे हमारे जो लिगामेंट्स हैं, जो स्मैश लेयर है 5 लेयर्स, उसमें भी सम हार्ड थिंग्स हैं, पॉइंटी थिंग्स हम फील कर सकते हैं, राइट। तो वो क्या है कि अगर सॉफ्ट जो सब खाया जा रहा है तो हार्ड को सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो हार्ड इधर उधर जाके क्या है, लॉट ऑफ प्रेशर एंड इट्स यहाँ पे आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, और जो नेजल कैविटी का पीछे वाला पैसेज है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जैसे इनहेल करते हैं तो बिफोर आई न्यू के एयर पाथवे में जा रहा है, अभी एयर नहीं जा रहा है उधर, अभी जैसे पूरी फेस में स्कैटर्ड हो रहा है, समझ आए। जैसे हम इनहेल करेंगे तो पीछे सारे फेस पे स्कैटर्ड हो रहा है। इट्स नॉट गोइंग थ्रू बिकॉज मसल्स आर डिस्ट्रॉयड, द वन दे हैव टू वो फंक्शन करेगा ना एयर को लेके जाने के लिए। तो आपको नाइट में स्लीपिंग में कोई दिक्कत होती है? डॉक्टर, व्हेन यू हैव अ फिजिकल इंजरी लाइक दिस, obviously there will be some level of anxiety, right? Because आप देख लो कि आपकी फिंगर हम यहाँ से तोड़ दें तो उसके टूटी हुई फिंगर से आपको फंक्शन करना हो तो हम आपकी बॉडी शेक करेगी, एंड दैट्स अ नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स, राइट। ऐसा ही मेरे फेस के पीछे टूटा हुआ है, तो हम नींद की ये प्रॉब्लम है कि हम जब आई एम टेकिंग आइब्रूफेन एवरी 4 to 8 hours. For what? Pain is too much. Okay. And I'm not a narcotic person, like I don't like to take control medications. Only I take a Tylenol or ibuprofen. I'm either taking every 4 hours or every 8 hours when I have extensive pain. Okay. Or yesterday हम वहाँ पे where does your pain start? Mainly it's behind my nasal and then right here and my throat. Okay, can you open it for me please? Say ha. 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 Okay, stay like that once. Or do you think we need to get the 3D ultrasound? So the CBCT is actually enough. I think it's good enough. Yeah. You remember last time आपने बोला था, लेकिन अमेरिका में आप तो स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएट हो, राइट? नहीं, not graduated. I go there as a visiting professor. Okay. Yeah. So you should have done my surgery over there. Oh, no. Okay, fine. One second. I'm just gonna. जो ओरल कैविटी के पीछे वाला स्ट्रक्चर है ना, एयर के और हमारे वहाँ पे संक हो रही हैं चीजें, not in the front. I know, it's a problem with your hyperpharyngeal airway. हाँ जी। और हमने जब से आपने हमें रिकमेंड करा था 3D अल्ट्रासाउंड, इवन वहाँ पे अमेरिका में हमें ना तो CBCT मिला, इतना हमने कोशिश करा, एंड ना ही हमें 3D अल्ट्रासाउंड मिला। So finally I was like my insurance approved me to see maxillofacial surgeon in UC Davis or UCLA, some kind of that, but it's too long and this damage is getting very extensive. Okay. So I could not even wait for all of this to get done. Because insurance system is, आपको पता है टाइम लगता है, इसका रीइंबर्समेंट होता है 3 weeks, फिर उसके बाद बहुत बड़ा इसी चक्कर में स्लो चक्कर में, और वहाँ हमारे एक्स का थोड़ा उसने बहुत बड़ी बात बना दी है कि आई एम अ रॉन्ग पर्सन, तो वो तो गॉड इज़ हेल्पिंग मी एंड विद मी एंड माई इंट्यूजन, तो आई एम विनिंग दिस, आई एम ऑन विनिंग साइड, तो आई एम जस्ट वांट टू लेट यू नो, इफ़ यू हर्ड समथिंग अबाउट मी, डोंट केयर अंटिल यू नो मी, राइट, एंड एनीथिंग बिकॉज it's just I'm gonna go through those acquisition and come up. All right. See now, so I've already seen your scans. Right. And if I look at you and look intraorally or whatever, your hypopharyngeal airway is a little bit less. So we can augment it by working on the lower jaw chin angle so that your space of breathing improves. Also, we could work on your septum to make sure there is more freedom in the passage of air. Thereby, it should improve your complaints, your primary complaints and concerns. What about this thing that have a hole? अभी ये खोखला हो गया है. So that is not true. There is no hole there as you feel that way. It's just the feeling that it's empty inside. On the scan, we have some passage that is less, but there's no like a hole. So you don't have to worry about that. So now the surgeries that I'm thinking that we can schedule, these are surgeries that will probably take me 4 to 5 hours in all, and recovery of a week to 7 or 8 days. So I think it will be better if you get, like you said, your mom or a relative to come over,
so they can be there to be by your side, to give you some support, to help you out, because some dietary restrictions will be अगर there. हमें ये लिगामेंट थोड़ा उठाना हो, ये नीचे यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है हमारे हार्ट जो खींच रही है. तो मेरे इसमें ना we have to do the thing that is involving your posterior airway and this, so that the improvement is going to happen. Right. All right, and जो चीज़ हम फील कर रहे हैं ना डॉक्टर, वो क्या है कि अभी यहाँ से टूट के इधर से इधर गिरा हुआ है. जो भी है हम आपको लेमन टर्म में बता रहे हैं कि अभी जो हम फील कर रहे हैं, ये अभी पीछे से इधर ऐसे टूट के गिरा हुआ है. क्या है हमें नहीं पता, यू नो एनाटॉमी बेटर देन मी, पर यहाँ से क्रॉस करके ऐसे गिरा हुआ है. तो but what is that गिरा हुआ, what is that crossing? It's like a wire, it's like a wire, like जैसे वायर होती है ना हमारी. You feel like that? हाँ जी, वो वायर है. और बाहर के जो आले दुआले उसको रोल अप करा हुआ है, वो फैट लेयर है. फैट में बबल्स होते हैं. See the kind of feelings that you get about those, I might not be able to control. Right. I can only control the actual anatomy that you keep saying. Now what you're feeling sometimes may not be directly related to your anatomy, because there is no wire there, there is nothing like that there. What is there is the hypopharyngeal airway is less. Your chin is protruded. Little bit asymmetry is there. Right. Some small issues there in the septum. These are the functional issues I can address. Right. But if you have a concern saying there is something holding me back like a wire, those I may not be able to address. Like what about what we can do about the fat or that we can remove, that's easy Okay, job. okay. That is cosmetic, Okay. that is all right. But certain complaints I may not be able to solve for you, which you have to understand. As long as you understand that some of your complaints we are going to take care for sure, especially those which you first said about the difficulty in breathing and asymmetry, that's done. But some of the things that you're saying about vague pains and things, that we may not be able to जैसे control. आप सर्जरी करोगे हाँ. और सर्जरी करते लेट्स फाइंड बिकॉज आपके पास हम बोल रहे हैं राइट, और इट्स नॉट एविडेंट राइट नाउ. लेट्स सपोज यू आर परफॉर्मिंग सर्जरी एंड यू फाइंड देयर इज एक्सटेंसिव डैमेज. पर नहीं है ना डैमेज. अरे स्कैन में तो सब कुछ दिखता है. एक्सटेंसिव डैमेज तो नहीं है, वहाँ पे जगह कम है आपको ब्रीथ करने के लिए, बस यही है. और उसकी वजह से आपको टाइटनेस महसूस हो रहा है. जो भी आपके कंप्लेंट्स 90% रिलेटेड है इससे, 10% रिलेटेड नहीं है. तो जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो रिलेटेड कंप्लेंट्स है उसका इंप्रूवमेंट मिलेगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा. जो अनरिलेटेड कंप्लेंट्स है उसके बारे में मैं बता नहीं सकता कुछ. शायद वैसे ही रहे, शायद इंप्रूवमेंट होए, बट आई कांट बी अश्योरिंग यू एनीथिंग. यहाँ पे जो हमारी 5 लेयर्स होती है ना, स्मैश होती है ना, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो कि वो स्योंक जो भी इन्फेक्शन जो भी है, जस्ट इमेजिन उसने खा ली है. ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो आप बोल रही है वैसा नहीं है. स्कैन में नहीं आता. नहीं, फिर नहीं आएगा. आएगा नहीं. तो वही मैं बता रहा हूँ. एक वो जो सारी 5 लेयर हैं वो उठ गई हैं, यहाँ से उठ के यहाँ पे इतनी हमें फील होता है, वो फोल्डनेस फील होती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी जो लेयर्स की है ना, तो वो यहाँ से टूट के इधर गिर गई हैं. और दैट्स ट्रू, स्कैन में नहीं आएगा. अगर इफ इट्स लाइक एक्सरे स्कैन और आई नो no, but you can see even the soft tissue to a great extent, and I'm not able to address these things. So have we done here too? Yeah. Okay. So what's the plan now? So the plan, that's what. So you will have to, so in case we're planning surgery to correct all of this, whatever we can correct surgically, you will have to get someone, like you said, to come down. So when can that happen? When you're gonna plan the surgery, then as soon as they come, maybe whenever you think that your folks can come down. रहने का भी खर्चा ज़्यादा. हाँ जी. तो अगर आप कल सर्जरी करोगे तो देन कल नहीं, परसों करेंगे तो आई कैन बुक देयर टिकट फॉर टुमारो. ठीक है, बेटर है. ठीक है, क्योंकि कल ज़्यादा टाइम कम है. हाँ जी. आज पूरा ब्लड टेस्ट करेंगे और भी वर्कअप कर लेंगे. ठीक है. और परसों का प्लान करेंगे. आप कल तक बुलाइए इन्हें, क्योंकि मैं एक बार उनसे भी बात करूँगा. हाँ जी, आपको क्या क्या है इंडिकेशन. और दूसरी बात मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ, सर्जरी के बाद आप अभी से बहुत सुंदर लगेंगी. सुंदर नहीं लगना डॉक्टर, मैं बता रहा हूँ, पेन है ना, वो है. ब्यूटी डजंट मैटर बिकॉज़ आई एम ओल्ड नाउ. No, but what I'm trying to say is the result will be such because when I increase the space of the airway inside, this will come down and forwards, your nose will get cleared inside, so the space will increase inside. Hence it will bring a positive look. Sometimes we do some functional surgery and the look may not be improving. It can get worse, and it's my duty to tell the patient, look,
because yours is more of a functional problem. Right. So those issues, I have to tell you, in your case, you can also expect some aesthetic improvement also. Right. At the same time, it's not going to get worse. Yeah. Only thing, certain complaints, certain issues that you're saying about the tightness like a rope and that thing, those things I may not be able to address them at all. So it might persist even after we correct the other issues, or God willing it doesn't. I mean, that's not in my hands exactly. That's something I won't be able to pinpoint, address and pinpoint, give you assurance saying कि ये भी ठीक हो जाएगा. हम इन जो यहाँ पे लेयर्स होती हैं उसको फिक्स कर सकते हैं, वो तो खराब हो चुकी हैं. तो वो जो आप बोल रही हैं कि अंदर देयर इज सम डैमेज, हाँ जी, इधर डैमेज है, उसको अगर फिक्स कर सकें दैट वुड बी द बेस्ट वे. सो द डैमेज, और उसके लिए तो वो जो डीप लेयर्स है ना, आप करेक्ट हैं कि 3D अल्ट्रासाउंड अगर हो जाए, मे बी देन यू विल हैव एक्स्ट्रा एविडेंस टू सी. ऑल दिस इज योर सॉफ्ट टिश्यू. हाँ. ஹலோ, சொல்லுங்க. இல்லை பார்க்க முடியல இன்னைக்கு, இன்னைக்கு தான் போனோம், இன்னைக்கு தான் நாளைக்கு. என்ன சொல்றாங்க? எதுக்கு?